Srimati Bhaktivedanta Swami iti namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paskacha Desatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. We still don't have the system of everybody chanting, because I don't know if everybody chants, he overwhelmed the microphone, he lags the internet. We have to check that out. Right, Gaurav? What do you think? Saurav, what do you think? Right? If everybody talk in the microphone and sing, then it overwhelmed the system. Anyway, so today, today we have an interesting, just 1 minute. Prabhu, state the topic of the class because I cannot go in my phone. Please. Saurav. Yes, Prabhuji. So today topic is learn from mistake without depression. Learn from mistake without depression. Okay. Today we learn from our mistakes without depression. Generally, a mistake, it depends of the quality, and I'm being nice here, of the intensity of the mistake. The mistake can cause a depression. It can cause something to, to doubt ourselves, to become doubtful of our, ability to act in a certain way. Because remember that what Krishna said to Arjuna, you slay this doubt of yours. That's a worst enemy. The doubt is the one that it frees you, don't let you act certain way, and you cannot carry your duty, or you cannot do what you're supposed to do. And doubt is not a very good thing. Sometimes we're doubtful, or we've been careful. But after the liberation, we should take a course of action. If we stay in a mind of doubtfulness all the time, then that's not very good. So today here, I make some notes, and they become devotee and they see the life of devotional, the pure life, and then they look back and say, "Oh my God, I have done so many terrible things, but things are not so good." You see,
instruct me to, or as I feel I should do to do my duty. You see, so knowledge is one of the things that it takes the doubt away. Hare Krishna, Prabhu. Okay, good. Hare Krishna. Yes. That's Kushbo. Yes, Okay, Prabhuji. shall I go on? Yes, Prabhuji. So we're going to start with, this time we're going to talk about mistakes. So mistakes creates doubts. Doubts whatever our path is proper or not. To dispel that doubt, knowledge is required, right? Like Arjuna, he had doubt, and Krishna said, where these doubts come from? And then at the end, he said, I'm ready to act. I'm ready to do what I'm supposed to do. So the difference between the beginning and the end in the Bhagavad Gita is the knowledge he was received from Lord Krishna. Hold on there. Okay, shall I translate now? Yeah, Just yes, going to my Krishna. notes. Okay, Okay. So we Okay. have to, yes, yes. ओके प्रभु जी ने जैसे बताया कि जैसे मिस्टेक्स जो होती है उससे हमें वो कभी कभी डाउट क्रिएट होता है और डाउट हमें तभी होता है जब हमारे पास नॉलेज की कमी होती है और जब हमारे पास नॉलेज आ जाएगा उसकी जब रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तब हमें सारी चीजें जो भ्रमित कर रही है वो चीजें चली जाएगी जैसे भगवत गीता में अर्जुन को नॉलेज मिला था श्री कृष्ण से तब वो अर्जुन ने भी कहा था कि अभी मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया है अभी मैं एक्ट करने के लिए रेडी हूँ यस प्रभु जी So the first thing we have to understand that mistakes, they are part of the conditioned life, to forgetfulness, illusion, and the influence of the three modes of nature. Mistakes are bound to happen. To live a life without make one mistake is almost impossible. So if some are big mistakes, तो how to प्रभु जी deal ने with भी that? You see, the first thing is of the mistakes. Okay, go ahead. again Pushpa? यस प्रभु जी ओके यस आई एम कंटिन्यू जैसे प्रभु जी ने बताया मिस्टेक्स जो एक पार्ट है कंडीशनल लाइफ का मिस्टेक्स तो होती है जैसे थ्री मोड्स ऑफ नेचर है इग्नोरेंस है पैशन है गुडनेस You है have, यस प्रभु जी शैल आई कंटिन्यू I keep going? Yes? ओके ओके हाँ Yes, प्रभु जी ने जैसे बताया you कि finish ओके the translation, yes. ओके प्रभु जी जैसे बताया मिस्टेक्स जो होती है वो हमारे पार्ट का एक लाइफ होती है हमारी जो कंडीशनल लाइफ है उसमें मिस्टेक्स जो होती है वो भी कैसे होती है Finish? जैसे हमारे वेट फॉर जस्ट 2 सेकेंड वो हमारी एक पार्ट का एक लाइफ का पार्ट होता है जो मिस्टेक हमें होती है हमसे होती है हम परफेक्ट नहीं हो सकते इस लाइफ में क्योंकि हम मटेरियल लाइफ में और थ्री मोड्स में है जैसे गुडनेस पैशन और इग्नोरेंस में है यस प्रभु जी कंटिन्यू I have come in contact with beautiful devotees, aspiring devotees, and they become very mortified. They become very stressed when they figure out, oh, I have done so many things that wrong, and now I'm a devotee, and they become very of that, and they become sometimes obsessed with that. I did so many things that are no good. You see, so we're gonna discuss that a little bit. Pushpa? जैसे प्रभु जी ने कहा कि कुछ एस्पायरिंग डिवोटीज है जैसे
yes, जैसे न्यू कमर्स है जो भी अपने पास डिवोटीज जो कहा जाते हैं, Right. उन वो भी ऐसे कभी कभी होते हैं कि हमने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की है, तो वो इस डाउट में रहते हैं। तो अभी आगे प्रभु जी इनके बारे में बताएंगे। अभी भी वॉइस थोड़ी कट हो रही है, तो प्रभु जी आपको लग रहा है या फिर मेरे नेटवर्क में मिस्टेक है? ओके, ओके, यस प्रभु जी, कंटिन्यू। So, we that mistakes are part of the conditional life. Krishna, those are behind you, and that is we have to focus on. Your प्रभु जी, slate वॉइस is clean. ब्रेकिंग। You start a new life. प्रभु जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hold on. Yes, your voice is cutting so much, Yes. so I'm unable to hear you clearly. So how can I translate them? Is it happening with everyone? Okay. What about now? I Yes, changed the yes. internet. I Yes, put data. Is that good? Yes. Okay. Am I better now? Yes, yes. I changed the internet. Yes, now I it's clear. changed the internet, so I think it'll be okay. Krishna. I ask everybody to be patient, and I appreciate your tolerance. Okay, so we're here in the number. I have 7 items we're going to discuss today. So the first one is to understand the purpose of the mistakes. Okay. अभी प्रभु जी यहाँ पे बताएंगे कि 7 आइटम्स है जो डिस्कस करेंगे अबाउट जैसे मिस्टेक्स है उन पर कैसे हमें रोक लगाई जाए। तो अभी प्रभु जी आगे एलिब्रेट करेंगे। यस प्रभु जी। So in our Vaishnava tradition, the mistakes are considered a stepstone for advancement in devotional service. You have some mistake, wonder how this happened, you correct it, and you become a better devotee. That is the purpose. That's how we see it. अभी प्रभु जी ने बताया कि जैसे मिस्टेक जो होती है हमारा पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे प्रभु जी ने पहले भी बताया, और फिर हम डिवोशनल लाइफ में आते हैं, मिस्टेक तो होती है, तो वो मिस्टेक जो होगी हम उसे सॉल्व करके इम्प्रूव करके हम और बेटर बनेंगे डिवोशनल लाइफ। यस प्रभु जी। Because it's said in the Bhagavad Gita, second chapter, verse 50, is a person engaged in devotional service is intelligent in the art of offer reaction. You see, once you attain devotional service, you don't get the reaction of mistakes, not as much as if you are just doing the things we used to do. अभी प्रभु जी ने बताया कि ये भगवद गीता कहाँ है, और श्लोक नंबर 2 के 15 दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 15 में कि नॉलेज जो है वो हमारी डिवोशनल सर्विस में जरूरी है, जो आर्ट है एक्शन करने के लिए। यस प्रभु जी। So the second point in here of our 7-point illustration, fallibility with humility. We're fallible. We're prone to make mistakes. So we have to accept that with humility. If we're proud on top of being making mistakes,
attaching to our ego. Vishnu? Prabhuji, your voice is still breaking. How can I translate? Sorry. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Yes, Prabhuji, can you say it again? Sorry. Yes. Yes. No problem. I stayed as much time for build for fallibility with to make mistakes. So we accept that with humility. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है, हाँ, मतलब थोड़ा बहुत वॉइस. Thank you so much. I think we have a better connection now, right? I'm sorry for everybody. I have to restart everything. yeah, Krishna Okay. testing us. Yeah, it's Krishna's testing our determination. Because right now, every time I have this class, I'm going to put the internet here. Because what's here, and I'm downstairs. But now for the class, I'll put it there. Okay, so let's where are we? Okay, here. We're gonna go. So we accept our fallibility, the infallible, the fallible, our fallibility with humility. We are not the controls, and accepting that was hard. Theoretically, yes, we can understand. I'm not the Lord of all, but we always try to control in different ways. That when you do that, it creates. We don't succeed all the time, and when we don't succeed, it creates a mood of depression on us. ओके प्रभु. अभी जैसे प्रभु ने बताया कि हम हमेशा कभी ऐसे सोचते हैं कि मोस्टली ये सोचते हैं कि हम ही करने और करना, जो डूअर है हम ही है, कंट्रोलर भी हम ही है, इससे हमें डिप्रेशन में आ जाता है. लेकिन हमें जब नॉलेज मिलता है कि कृष्णा है, डूअर है, कंट्रोलर वो है, तो हम डिप्रेशन के इस मोड में नहीं आते. यस प्रभु जी. So depression, it's arise from pride being hurt or our expectations. We expect something and then we don't get what we expect. Could be financial, personal relationships, standing in society, so many things can actually trigger our depression. ओके. डिप्रेशन जो है ये चीज कहाँ से आती है? जब हमें प्राइड होता है, जब हम कभी सोचते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, चाहे वो हमारी पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर और कुछ भी चीजें लेके होती है, तब ये चीज डिप्रेशन जो होती है वो आती है हमारे लाइफ में. यस प्रभु जी. So we have to accept we're not the doer. You see, we're not the controller. But it's easy to say, but it's hard to actually internalize in the heart this. We have to practice that. And when, remember Bhagavad Gita 3:27, and Krishna is saying that by studying that verse, we can relieve of the guilt. No, because we're not the doers. Krishna is in control. Let Krishna does his job. He's the Supreme Lord. Let him do his job. We do our job, which is to surrender and trust him. The point is, we try to do Krishna's job and manipulate the situation around us, and now that's how we get in trouble. प्रभु जी ने अभी जैसे बताया कि भगवद गीता के 3.27 में कृष्ण बताते हैं कि वो ही कंट्रोलर है,
लेकिन हम ये चीज हमें पता तो चलता है, हम पढ़ते हैं इस चीज को कि यस कृष्णा कंट्रोलर है, वही डूअर है, लेकिन ये सुनने में इजी लगता है, लेकिन हमारे लाइफ में इसे एक्सेप्ट करना कभी कभी हार्ड होता है। तो हम डिवोशनल लाइफ में इसीलिए ताकि इस चीज को प्रैक्टिस करें और इस चीज को समझे कि कृष्ण ही डूअर है, कंट्रोलर है। ये डिप्रेशन का टाइम, डिप्रेशन का जो पीरियड होता है, ये हमें तभी प्रॉब्लम देता है जब हम कृष्ण को डूअर और कंट्रोलर नहीं करके खुद को समझते हैं। यस प्रभु जी। So we have some homework. When we chant sincerely while praying for correction, not perfection. Correction. And correction comes by illumination within our heart to understand what we should do, take the doubt away. You see, and that's how it works. So that's a homework in there. प्रभु जी ने जब भी बताया कि हमें कुछ होमवर्क करना पड़ता है, जैसे कि हमारे जो होमवर्क है डिवोशनल लाइफ में चैंटिंग, तो हरे कृष्णा पे हम चैंटिंग करते हैं, उसमें हमें सिंसियरली चैंटिंग करनी है, और चैंटिंग भी इसलिए करने के करेक्शन करना है, ना कि परफेक्शन करना है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। यस प्रभु जी। Okay, so the number 3 here is engage in constant sadhana. Okay, depression arises from disconnection with the soul's original purpose. You see, this is a little bit that we have to meditate on. You see, when we are in some sort of misdirection, then we get depressed. We don't see, how there's no solution to my problem. There's no, there is always a solution. You see, but then we have to be in a situation that the solution can come to us. यस प्रभु। अभी जैसे इसमें प्रभु जी ने बताया कि हम हमेशा सोचते हैं कि किसी कभी कभी कोई, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन तो होगा ही। वो इस चीज से आएगा कि हमें कॉन्स्टेंटली साधना करनी है, उससे सॉल्यूशन भी निकल के आता है कि ना कुछ सॉल्यूशन होगा ही हर प्रॉब्लम। यस प्रभु। See, depression arises from disconnection with the soul's original purpose. Okay, I'm again rephrasing that. Sometimes we have, even in our society, devotees that, no, sometimes we have elevate Vaishnava sannyasis, and they're doing business for Krishna, and they get too much involved in material affairs, and they lose the purpose, and they go in a situation, they get a little depressed because they go away from the original purpose of the sannyasi ashram. You see, too much materialistic thoughts in the sannyas mind. Okay, for the Gihasta, yes, that's what he has to do. But then too much of that too for the Gihasta. Okay, too much of that for the Gihastra also it's not good, because he has to balance his life with the proper spiritual life and his life to support his spiritual life, Gihastra life. भाई प्रभु जी ने बताया कि कभी कभी हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत एलिवेटेड कोई सन्यासी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले तो वो डिवोशनल लाइफ में अच्छे होते हैं, फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो उनका जो पर्पस है, जो मेन पर्पस है, वो भूल जाते हैं, वो भटक जाते हैं उस रास्ते से और फिर से उसी डिप्रेशन पीरियड में आ जाते हैं। और हम गृहस्थ को भी जो देखते हैं, गृहस्थ को भी बहुत ज्यादा भी गृहस्थ जीवन इतना नहीं, मतलब जाना है, मतलब बैलेंस करके चलना है स्पिरिचुअल लाइफ में भी। और सेम थिंग है सन्यासी के लिए भी। यस प्रभु जी। Right? Krishna said, the yogi, we're yogis. We should eat too much or eat too less, or sleep too much or sleep too less. We have to be balanced, because it's in the balance that the yoga mentality appears in your heart. You see, yoga means to connect. We connect with Krishna through this balanced process. Okay, that's Bhakti Yoga. ओके। अभी प्रभु जी ने बताया कि कृष्ण जैसे भगवद गीता में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि जो बहुत एक जो चीज होती है कि बहुत ज्यादा करना और बहुत कम करना, वैसे सन्यासियों के लिए जो होता है, ना हमें बहुत ज्यादा खाना, ना ही बहुत कम खाना है। इस चीज को हमें बैलेंस करना होगा, इससे हमारी मेंटेलिटी अच्छी होगी, हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। यस। Now, the daily chant of the Hare Krishna Maha Mantra, okay, with a joyful heart, and it gives clarity and lifts the fog of mental distress.
अब जैसे हमें प्रभु ने बताया कि हरे कृष्णा की जो हम चैंटिंग करते जब करते हैं, वो हमें जॉयफुल एकदम खुशी से अच्छे से हम दिल से जो जब करते हैं, तो हमारा हमारा जो ये फॉग होता है, जो एकदम डर माइंड जो होता है, वो इन चीजों को क्लियर कर देता है और हम अच्छे से आगे अपने लाइफ में कंटिन्यू करते हैं। यस प्रभु। Rain is praised again. Prabhuji, can you hear me? Right. So we have the daily chant of the Maha Mantra. It gives clarity, lift our mental distress. Regular association with devotees, kirtan, shravanam, and prasadam, of course, purifies the mind. So that is something good to relieve the depression and stress. Okay, it's one of the steps. Okay, so the practice here is to keep bhakti routine, even if minimal, to stay spiritually strong. यस प्रभु जी। ओके, अभी प्रभु जी ने बताया कि जैसे हम डेली लाइफ में अगर चैंटिंग हम करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, क्लैरिटी आती है हमारे लाइफ में, और जो डाउटफुल चीज जो होती है उसे हम पीछे छोड़ देते हैं, और रेगुलर हमें रहना है, जैसे भक्तों के संग में रहना है, प्रसादम डेली हमें खाना है, तो ये सारी चीजें हमें रिलीफ देगी डिप्रेशन से, और हम भक्ति के तरफ आगे बढ़ेंगे। भले हम कम ही भक्ति करें, लेकिन ये हमें बहुत स्ट्रांग इफेक्ट देगा। यस प्रभु जी। Thank you so much. So, fourth, we can learn from Vaishnava's example. Okay, great devotees like Arjuna, Bharata Maharaj, Indra, they made mistakes. The demigods or the very powerful Vaishnavas, right? Arjuna, Bharata Maharaj, he got attached to a deer and he went through a different, you know, took different bodies to come up to come up back to devotional service. It was a mistake, but Krishna always correct the devotees. See, that's the thing. If you make a mistake, you have to have the faith that Krishna will correct whatever that mistake is, and so you can always be participating in devotional service. Okay. अब प्रभु जी ने बताया कि हम ये चीज सीख सकते हैं, जो हमारे वैष्णव्स हैं उनके आचरण से हम ये चीज सीख सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने एग्जांपल बताया, अर्जुन है, भरत महाराज है, डेमिगॉड्स है, ये सब बहुत अच्छे भक्त रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा भटक जाते हैं, तो कृष्ण की भक्ति में रहने से वो फिर से आ जाते हैं आगे। जैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल है, वो किसी डियर से अटैच हो गए थे, तो उनको फिर से जन्म लेना पड़ा था, और अगेन वापस से उनको डिवोशनल लाइफ में आना पड़ा था। तो कृष्णा वैसे हम भक्ति में रहेंगे, तो कृष्णा हम अगर हमारा डाउनफॉल में भी हो जाए, तो कृष्णा हमें फिर से इंस्पायर करते हैं और फिर से भक्ति में लेके आ जाते हैं, हमें करेक्ट करके। यस प्रभु जी। So the idea is, if these great devotees who make mistakes, they being rectified by Krishna, so Krishna also can rectify our mistakes and always bring us back to the path of devotional service. We have just to be persistent with great endurance. ओके, प्रभु जी ने बताया जैसे ग्रेट डिवोटीज जो होते हैं, वो भी कभी कभी मतलब भक्ति लाइफ से नीचे चले जाते हैं, तो कृष्णा अगर वो जो डिवोटीज है भक्ति लाइफ से नीचे चले जाते हैं, वो अगर कृष्णा से प्रे करते हैं, तो कृष्णा भी उनको रेसिप्रोकेट करते हैं और फिर से उनको लेके आते हैं डिवोशनल लाइफ में। और उसके लिए जो डिवोटीज है उनको हमेशा एंथुसियास्टिक मतलब उत्साहपूर्ण रहना होगा। So number 5 here, what to do with the mistakes? So one of the things you can do, besides you absorb that, you study, and then you fix, so it won't happen again, right? But you also can offer the mistake to Krishna. Offer to him. It's not an offering of love, it's an offering of, let me correct me, Lord. Correct me. I'm offering this to you so it can inspire my mind
to overcome this. Some devotees, they have problems dealing with 4 regulative principles, and maybe some of the, intoxicants and some, whatever it is, the regulative principles, then they offer that to Krishna. And, and Krishna will guide them in the heart to create the detachment necessary to give up that. You see, to give up that nicely. And you see the hand of Krishna in your life. You have to have that kind of faith, because Prabhupada is giving us that. Prabhupada said, if you simply try your best, Krishna will help you. That is, that is our thing. We try our best, sincerely, okay? So you can say in prayer, Krishna, I made this mistake. I fell in here. This didn't go right. Please enlighten me. Give me the way to how to go forward and correct this. ओके, प्रभु जी ने बताया कि मिस्टेक्स हम कैसे जो होती है हमारी डिवोशनल लाइफ में, हम उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। हमें कृष्णा को ही वो जो भी हमारे से मिस्टेक हो जाती है, हम कृष्णा से प्रे हमें करनी चाहिए, कृष्णा हमसे ये गलती हो गई है, तो कृष्णा हमें अंदर हृदय में जो हमारे भगवान जो है वो हमें गाइड करेंगे कि हमें उसे कैसे करेक्ट करना है। और जैसे किसी भक्तों को 4 एग्रीव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में दिक्कत आती है, अगर स्टार्टिंग में कोई फॉलो कर पाता है फिर वो नीचे गिर जाते हैं, तो चाहे इंटॉक्सिकेशन हो चाहे जो भी हो, तो कृष्णा हमें उसमें हेल्प करते हैं। इस चीज में हमें विश्वास रखना होगा, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हमें विश्वास तो रखना होगा कृष्ण पर, तब वो हेल्प करेंगे हमारे हृदय में, वो हमेशा है। यस प्रभु जी। I know Prabhupada said in his books that there's nothing can stop the sincere desire of the jiva to reach towards Krishna. Nothing. There's nothing. There's no power in this world, in this material world, that can stop you from going towards Krishna. प्रभुपाद ने अपनी बुक में ये लिखा है जो प्रभु जी कह रहे थे। मुझे पता है कि प्रभु जी ने मतलब प्रभुपाद ने इस बुक में लिखा है कि कोई भी ऐसी पावर नहीं है इस दुनिया में जो तुम्हें कृष्ण तक पहुंचने से रोक सकती है। यस प्रभु जी। Now, the only thing that can stop you reaching Krishna is ourselves. Without, that's doubt. That is, we don't believe in ourselves in devotional service. We have the doubt that we can actually get the mercy of Krishna. We don't believe it. So therefore, association of Vaishnava is important. Sadhana is important. Chanting is important. You have to surround yourself with these things. This is our shield. The shield that negativity cannot come to you. प्रभु जी ने जैसे बताया कि ऐसी कोई पावर नहीं जो तुम्हें कृष्ण तक पहुंचने से रोक सकती है, लेकिन हाँ एक चीज है जो हमें रोक सकती है, वो है हम खुद ही विश्वास नहीं रखते, डाउट करते हैं, बिलीव नहीं करते हमारे डिवोशनल सर्विस पे। तो उन चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चीज प्रभु जी ने 2 चीज बताई, एसोसिएशन भक्तों का और दूसरा है साधना हमारी, जो हम हरे कृष्ण का करते हैं। ये एक टाइम का एक शील्ड हो जाएगा, हमारे ऊपर एक कवर हो जाएगा जो हमें डाउट नहीं करने देगा और हमारा फेथ जो है डिवोशनल लाइफ में और आगे बढ़ाएगा, स्ट्रॉन्ग करेगा उसको। यस प्रभु जी। Because depression is a quality associated with the lower modes of material nature, tamaguna. See, somewhere in depression, somewhere tamaguna is in there. Okay, now there's sometimes depression because you got hurt in something, it's a temporary depression. But when depression is going on for a long time, then tamaguna is taking over. Step by step, it's taking over. प्रभु जी ने बताया कि जैसे एक डिप्रेशन होने का एक और कारण है कि हम ऐसे लोगों के एसोसिएशन में होते हैं जो तमोगुणी होते हैं, और वो कभी कभी हमारे हृदय में जो डिप्रेशन का टाइम पीरियड जो होता है वो टेम्परेरी होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डिप्रेशन का टाइम है वो लंबा चला जाता है, तो वो हमें ब्रेक कर देता है इन सारी चीजों में, मतलब डिवोशनल लाइफ में। यस प्रभु जी। So what is tamaguna? It's darkness, lethargy, some kind of laziness. Okay. Yeah. प्रभु जी ने बताया कि तमोगुण क्या है, जो हमें समझना होगा। तमोगुण में लेथार्जी मतलब एक लेजीनेस, आलस्य है,
भक्ति जीवन में। यस प्रभु जी। So how do you counter darkness? You counter with light. Laziness with action. Sattvic action. Where does the light come from? It comes from the spiritual activities that we do. Bhagavatam, the reading, beautiful pastimes of the Lord, associate the temple. You know, that's beautiful. We wake up early, take clean food, prasadam. We avoid excessive sleep. We avoid that. And gossip and laziness, because that bring you back to the tamaguna. प्रभु जी ने बताया कि अभी जो तमोगुण है, जो लेजीनेस है, डार्कनेस का पार्ट है, इसे हम कैसे काउंटर करेंगे, कैसे इसे हटाएंगे, हमारी लाइफ से हटाएंगे। तो इसे हमें करना होगा, जैसे डार्कनेस है तो उसे हटाएंगे हम लाइट से। तो वो चीज़ होगी, हमें जब एक्शन लेंगे, जो फ्यूचर लाइफ में एक्टिविटीज करेंगे, जैसे रीडिंग है, भगवान के जो भागवतम है उसमें हम भगवान के पास टाइम जो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर सुंदर भगवान के लिए वो पढ़ेंगे, और प्रसादम खाएंगे, वो सब चीज़। तो ये चीज़ मतलब लेजीनेस को, तमोगुण को हम काउंटर कर सकते हैं, लेकिन हमें गॉसिप और लेजीनेस फिर से नहीं लानी। यस प्रभु जी। Okay, so there is a mantra that I can tell you that can immediately dispel all depression and all darkness. Do you want to learn this mantra? I'm asking. यस प्रभु जी। Yes, प्रभु जी of पूछ course. रहे हैं कि Yes, of ऐसा course, एक we want मंत्र to है। know about. Yes, yes, Prabhuji. Oh, I got some feedback in there. I know you're thinking this is the Maha Mantra, but before the Maha Mantra, there is another mantra. This is the mantra. You approach a devotee and say, Prabhu, Mata, how can I help you? How can I help you? How can I serve you? Okay, it looks very, wishy-washy, but actually, lot of devotees, they have all kinds of things in their minds. They have anxieties, everything. You approach them with a sincere effort to give them a association. They can talk to somebody. They can try to use you as a mirror so they can see a problem that they cannot see themselves in their own heart. You see, so by doing this service, your melancholy, your depression, everything will go away. You see, very fast too. Plus, Krishna becomes very happy when you are assisting other devotees in this service. ओके, प्रभु जी ने बताया कि जैसे एक मंत्र हो जो है, जैसे सारी चीजें पहले मतलब दूर हो जाएगी, हमारा जो डिप्रेशन है, लेजीनेस, तमोगुण, वो सारी चीजें हो जाएगी जो हमें मंत्र से पहले करना है। और प्रभु जी ने बताया कि जैसे कृष्ण किस चीज से ज्यादा खुश होंगे, कि हम ये कह सकते हैं किसी को जो भी प्रॉब्लम है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ये हमारा जब नेचर रहेगा दूसरों को हेल्प करने के लिए, कृष्ण के पास ले जाने के लिए, तो कृष्ण हमसे और ज्यादा प्रसन्न होंगे। यस प्रभु जी। I love to approach devotees. Devotees I never seen in my life. In the festival, Mayapur, many devotees come from all over the place. All kinds of bhaktas, first initiation, they come in Mayapur. And I see a devotee there, and I just approach them. Hey, how are you doing? Where are you from? And I have my my personality is called Bhakta Bhagi. When they ask what my name, I said Bhakta Bhagi. No, just like them. I'm just like them. You see? And they tell me, this, they came here and they have this, they have the family, or sometimes there's a problem there or some victory there. They all is struggling with material energy and they try to be devotees. And it's a beautiful thing. ओके, प्रभु जी ने कहा कि मुझे भक्तों को अप्रोच करना बहुत पसंद है। जैसे मायापुर में जब जाते हैं प्रभु जी, पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आते हैं फेस्टिवल्स में, उनके हरिनाम का जो इनिशिएशन सेरेमनी होती है, दीक्षा समारोह जो होता है, उसमें बहुत सारे डिवोटीज पूरे वर्ल्ड से आते हैं। उसमें प्रभु जी किसी को भी देखते हैं तो उन्हें कहते हैं कि कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बताओ। और बहुत सारे डिवोटीज ऐसे कहते प्रभु जी को एक नाम से जाते हैं, भक्त बागी। तो प्रभु जी कहते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है। और जब प्रभु जी उन डिवोटीज से पूछते हैं तो कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो वो अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स प्रभु जी शेयर करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है,
जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम, मटेरियल एनर्जी की जो भी प्रॉब्लम, जो भी एक्सेट्रा बताते हैं वो सब प्रभु जी को शेयर करते हैं। यस प्रभु जी। To offer friendship to a devotee is most beautiful thing. Sometimes I'm not so advanced. I'm just a bhakti, a bhakta, It doesn't matter because you may be not advanced as you think, but you have experience, human experience in certain things. And you can talk about, let's say if you are mature, Mataji, you can talk about children and education of the children and maybe husband and maybe wife and all these things, these things that at this present moment are important in the life of a devotee, you see. And if we do this with good care, the person will be very thankful to you. And Krishna, you see, because in the Bhagavad Gita, Krishna said, the one who preached to my devotee, he's very dear to me. You see, it's dear to Krishna. You want to be dear to Krishna, you use the devotee to uplift the devotee. When you make them up, you go up. यस प्रभु जी। अभी जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये बहुत एक अच्छी बात है कि हम किसी को अपनी फ्रेंडशिप, मतलब टू ऑफर फ्रेंडशिप, किसी को हम हमारा फ्रेंड बनाना अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, स्पेशली डिवोशनल लाइफ में। और कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि मुझे वो भक्त बहुत ज्यादा पसंद है जो मेरे प्रति, wait for a second, someone is calling me. What is that? No bro, sorry, someone is calling me, so I cut the call. Oh, okay. ओके प्रभु जी ने बताया कि ये बहुत अच्छी बात है किसी को फ्रेंडशिप ऑफर करना, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। चाहे वो माता जी जो होती है वो एजुकेशन के लिए बात करते हैं, और प्रभु जी जो भी वो भी वैसे बात करते हैं, और वाइफ जो होती है वो गुड केयर, जो केयरिंग का जो नेचर होता है माता जी को, उसके रिलेटेड बात करते हैं। और कृष्ण जो है वो भगवत गीता में कहते हैं कि मुझे वो भक्त बहुत प्यारे हैं जो मेरी भक्ति को, मेरे मेरे नाम को प्रचार करते हैं। कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और जो भक्त इस चीज को ऊपर लेके जाएगा वो भक्त भी अपनी भक्ति लाइफ में उतना ही ऊपर पहुंचेगा। यस प्रभु जी। So, number 7, and the last item here, we should always seek support from devotees. Just like here, we're doing association, also support Mataji, my wife, she does a lot of that kind of support. It's beautiful because when you're solving the devotee problem, because everybody has problem, right? Even the counselor. But when you're solving the devotee's problem, your problem goes away, becomes small. At one point, it's not even exist anymore. You see, this is a beautiful thing. We think, we have big problems, but we see when you go around and see everybody else's problems, our problems are not so big, and they get resolved by just time or just a little manipulation, a little work. You see, so if you can do that, it's a wonderful thing because the devotees are there. Krishna give each one can talk to them and go back and forth talking about Krishna and talk about how to become a better devotee, how to, make a better effort in devotional service. We can read together, sing together, and that is a beautiful thing. If there's no devotee, no, my God, we're all alone. So here, the Vaishnavas are here. This is amazing thing, all this internet thing. It's amazing. We can, have that shelter in here. We talk to each other. We hear a little bit, every Sunday. It's a beautiful thing. Soon we're going to start to have reading. Okay. I do not know how to do this, but we're going to do this. We're going to get one day and do the reading. And you're going to read the Prabhupada Transcendental Diary. And, I have already some ideas that I want to implement with that. So we're going to do that. So 1 hour, Sunday, and 1 hour during the week somewhere, we can read
some transcendental pastimes of Srila Prabhupada, and see how he start this wonderful society of Krishna consciousness. Okay, Pushpa, please. Yes. Sorry. प्रभु जी ने जैसे बताया कि हम ही हर किसी को अप्रोच करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए डिवोटीज को। डिवोटीज के हम एसोसिएशन में रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करके ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रभु जी की वाइफ है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं डिवोटीज को। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में भी, चाहे काउंसलर हो, चाहे हम नियरफाइड डिवोटी, नए अपकमिंग डिवोटीज हो, हम जो भी हो, हम हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। तो कभी कभी ऐसा काउंसलर के साथ भी ऐसा होता है, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम अगर जिस भी डिवोटीज को हेल्प करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमारी प्रॉब्लम हमें इतनी छोटी लगने लगती है कि हम भी उस चीज से आसानी से निकल जाते हैं और हम बेटर डिवोटी बनते हैं। उनको भी बताते हैं कि कैसे हमें एसोसिएशंस में रहना है। और यहाँ पे हम देखते हैं, प्रभु जी ने जैसे बताया है कि इंटरनेट की फैसिलिटी से आज बहुत सारे वैष्णव संघ भक्त एक साथ में यहाँ पे जुड़े हैं और हर संडे को हम यहाँ पे भक्ति के रिलेटेड हम बातें करते हैं। और प्रभु जी ने बताया कि बहुत ही जल्दी हम रीडिंग भी शुरू करेंगे। और वो रीडिंग अभी कैसे क्या करना है वो इतना इफेक्टिवली, मतलब इतना एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन जरूर करेंगे। प्रभु जी का ज्यादा बहुत अच्छा है। और जो होगा स्पेशली श्रील प्रभुपाद की जो ट्रांसेंडेंटल डायरी है, उनकी जो मेमोरीज है, उसके बारे में हम आगे रीडिंग करेंगे, चाहे वो 1 घंटे के लिए या जैसे भी हो। यस प्रभु जी, कंटिन्यू। हरे कृष्ण। So the beautiful thing of Dadati Pratigrinati, to exchange uh, uh, advice to devotees, to offer gifts, offer prasadam, is that when you exchange the information of the devotee, you're not just giving the knowledge to that devotee that may be below you, is this new devotee, but you also gonna learn from that devotee something special, because Krishna consciousness will work both ways all the time. If you think I sit in here and I only tell people, what Krishna consciousness is, but I am also learning from all of you. You see your determination, your sincerity, your struggles. You see your heart sometimes convoluted with doubts and all these things. And I'm there with you. I'm, not because I'm nothing special, because, this is a struggle, all of us. You see, all of us, because I also passed the stage you are in. You see, I was not so long ago a young man. I was a young man. And in our time, there was nobody. There was no counseling, no talking, do your job, or you get a mop in the head or something. ओके। यस प्रभु जी, ये प्रभु जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी एक ब्यूटीफुल चीज है, एक्सचेंज करना, एक दूसरे का मतलब रेसिप्रोकेट करना, आदान प्रदान करना डिवोटीज के लाइफ में, जो हम भक्ति जीवन में है। एक जरूरी नहीं कि हम एक हमेशा एडवाइस ही ऑफर करें, कभी हम किसी को डिवोशनल लाइफ में किसी को गिफ्ट भी ऑफर कर सकते हैं, प्रसादम भी ऑफर कर सकते हैं। और जो सामने वाला जो भक्त है उन्हें भी ये चीज, और इवन हमें भी, जो सिखाने वाला और जो सीखने वाला, दोनों को ये चीज भी सीखनी चाहिए। स्पेशल ये कि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहे। और प्रभु जी भी कह रहे कि ऐसा हमें एक सोचना नहीं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हमें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि हम अकेले हैं, क्योंकि प्रभु जी ने कहा कि मैं हूँ आपके लिए, मतलब प्रभु जी हमारे लिए है यहाँ पे, वो हमें हेल्प करेंगे। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सिर्फ बैठूं और सिर्फ बातें करता रहूं, क्योंकि वो भी कभी हमारी एज में, इस स्टार्टिंग फेज में थे। यस प्रभु जी। You see, we all advanced. I can see. Like, take, for example, our dear Kushbo here. She was in the beginning, first time, she was so doubtful. Oh, I don't know if I can translate it in Hindi. And she was very, she was doubtful. But no, me and my wife, we said, no, go, you can do it, you can do it. I seen today, she's like a rocket. She's like a rocket. She's so good. She's so affirmative. So I just not her, all of you. I see Saurabh, Gora, we all grow in devotional service. And I see this, I feel very inspired. Okay. So our job is to approach Krishna. Okay. And
the best way to approach Krishna is through the devotee. That is the mercy that Krishna gave us, is that the fellow devotee. Because once you take under your arm that devotee, you see, you guard his devotion. You guide as much as you can. You give the human touch. You know, Krishna recognized that. Krishna recognized, and he will shower you with mercy. Don't be an island devotee. I'm doing my thing, and I don't care much about everything else. You know, it's okay. It's your solitary bhajan. It's good, but it's glorious to be in the sangha of the devotee. And Prabhupada gave us glory, not just solitary. प्रभु जी ने जैसे बताया कि कुछ डिवोटीज हैं हमारे ग्रुप में, जैसे एडवांस के है, जैसे सौरभ प्रभु और प्रभु जी, वो काफी एडवांस कर गए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा था, इवन प्रभु जी ने मेरा नाम दे दिया कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा फंबल कर रही थी काफी सारी चीजों में, लेकिन माता जी प्रभु जी के आशीर्वाद से, की मर्जी से हम सब आगे ऐसे एडवांस कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और बेस्ट थिंग जो है, बेस्ट एक तरीका जो है अप्रोच करने का कृष्ण को, वो है ना कि सीधे तरीके से, भक्तों के तरीके से जाने का। भक्तों के वे से हम वहाँ के अंडर गाइडेंस में वैसे हम होके हम कृष्ण की तरफ जाएंगे तो कृष्ण बहुत जल्दी हमें सुनते हैं और कृष्ण हमें रिकॉग्नाइज भी करते हैं और कृष्ण की मर्जी बहुत ज्यादा हम पर बरसती है। और हम हमारा भजन जो हम करते हैं वो तो हमें अकेले करना ही है, लेकिन एक हमें भक्तों की लाइफ में एक जो है महसूस हमें साथ में चाहिए। Yes, Prabhu. Okay, so we take this time now. We take some questions. Okay, maybe somebody wanted some further development of the questions. Let me see here. Chat. Okay. किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी पूछ रहे हैं। कोई माइक ऑन करके भी कह सकता है, कोई टाइप भी कर सकता है। ओके, क्वेश्चन फ्रॉम सीमा मेरा परिवार। Seema. Hey, Mataji Seema. Nice to hear from you. Okay. Hare Krishna. Thank you. Prabhuji, I wanted to extend my question that Yes, please please. teach all of us how to appreciate the goodness, how to appreciate the goodness in people like you. I think so people are deficit in appreciating people. And I vouch for Mataji, for Mata, Paripurna Mata. And you also in your discussion was so inclusive. I think so. I mean, for me, it was quite a great learning experience. Just expand and please tell all of us how to be more inclusive in appreciating people. You said even once upon a time, even I was like this. Like, you brought us to we know that what you are and where you are, but you brought us, you brought yourself so closer to us that I felt that just like Mata, whenever I talk, I feel that you are much more closer. I think so. I should also now start interacting with you, Prabhuji. So please tell all of us how to appreciate small mundane things also in people, and Krishna would come closer to us. I love your faith in that. Mata, let me tell you. I'm gonna talk about gold. Gold. You know gold? Everybody likes gold. Who doesn't like gold? Everybody likes gold. How do you get gold? Well, in the old times, they go in the river and they go with this big pan and they shovel the river, shake, 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 shake. They look out, shovel the river again, shake, shake, shake. Once in a while, they get a thing called pepita. Pepita is a little piece of gold, right? That's how it's called, the garimpo. I don't know how that's a name for that in English. But no, that's how you farm gold, and you get gold. That's how it was at that time. So devotees, they are like the river. Inside each devotee, there's many pepitas of gold
that you have to go and shovel there, find out, and bring it out, you know, and both of you share that pepita. That pepita is special because pepita is a little piece of gold. You can, once the pepita come out, it become two, one for you, one for that person. You see, we like, you know, farming gold by talking to the devotees. You know, you get something by befriending a devotee, and that is, you know, the devotee instinctively to teach you something, or you let to see that will be good for you too, even though you may be more advanced. You see, in Krishna consciousness, we learn in all directions. You see, even the most humble devotee, he has pepitas inside his heart, things, realizations, even in this, you know, very, how do you call, very initiative process, he still has something that they can teach a very advanced person. You see, a realization that we miss in our journey to Krishna consciousness. You see, so it's all around some good thing. Devotees, they are a depository of pepitas. Okay. You got that, Pushpa? Yes, Prabhuji, it's too long, but in short, I can translate it. Okay. Yes, you give the gist. You Okay. give the gist. ओके ओके प्रभु जी ने बताया कि डिवोटीज जो होते हैं वो उस नदी के समान होते हैं जो मतलब पूरी जो भरपूर होती है, और जब प्रभु जी ने जो पपीता नाम का कुछ कहा है वो अंदर से निकलता है हम जो, और हम उसे ढूंढ और सब में बांटते हैं। जैसे भक्त भी उसी तरह होते हैं अपनी लाइफ में, भक्त जो होते हैं डिवोशनल लाइफ में घुसते हैं और उन्हें जो भी प्राप्त होता है, जो भी चीजें वो सीखते हैं, वो दूसरों को, दूसरे जो भी डिवोशनल लाइफ में आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, उन सब में से वो बांटते हैं। और वो वैसे ही वो खुद भी डिवोटी एडवांस होता है और दूसरों को भी वो वैसे एडवांस करता है, और सब मिल के एक साथ में उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। यस प्रभु। I can tell you, every devotee has some beautiful to give to the world. That is because they are part of Krishna. Krishna is inside the heart of the devotee, and Krishna is the most wonderful thing. Every person has something beautiful to give to the world. And as a devotee, we should bring that out, show to the devotee, and we keep some in our heart too. ओके, प्रभु जी ने बताया कि जो भी डिवोटी है, जो भी सोल्स है इस धरती पे, जो जितने भी डिवोटीज है, उन सब में कुछ ना कुछ कृष्ण ने स्पेशल दिया है, और वो जो स्पेशल है वो वर्ल्ड में सबको वो बांट सकते हैं। कुछ ना कुछ जो भी कृष्ण ने उनको स्पेशल दिया है। यस प्रभु जी। So people ask you, what do? You said, I am a miner. I mine pepitas of Lord Chaitanya. You got that? Krishna? Sorry, Prabhuji, someone was disturbing me. Can you please repeat again? Okay, somebody asked us, what is it that you do? You said, we're miners, mining, like a mining. We mine pepitas of gold for Lord Chaitanya. Lord Chaitanya, what is Lord Chaitanya? It's the gold avatar, isn't it? It's gold. So we mine little Chaitanyas from the heart of the devotees, you know, for us and for the devotee itself, like that. We're miners. ओके, जैसे प्रभु जी ने कहा कि जो गोल्ड जो होता है, जो स्वर्ण होता है, और हम देखते हैं कि इस कलयुग में जो स्वर्ण अवतार है, जो गौरव महाप्रभु है, श्री लॉर्ड चैतन्य है, वो उसी तरह आए हैं, और हम सब उसी तरह हमारे हृदय में भी छोटा छोटा सा वो है जो हम सब बांट सकते हैं, और इसी तरह ये जो लॉर्ड चैतन्य का जो ये मिशन है वो आगे बढ़ा सकते हैं। यस प्रभु जी। Here I have a question. Somebody said that the pressure something arises from expectations. So how to stop expecting from others and from ourselves as well? Excuse me. Okay. As a medical student, I expect from myself so much,
it is about studies, about scoring marks. You're all students, most of you should know about that. The expectations, especially when the exam is going on, we suffer a lot. Thinking about the much about the result. Now let's tell you, depression and suffering are two things different. Like suffering is temporary. You go, you have anxiety, you have to study hard for that exam. See, depression is the thing that stays after the exam. You feel like, a turbulence in your heart, you see, and you feel depressed, because you let that original suffering become a depression. It's the second level. Okay? ओके, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है, अंकिता माता जी का क्वेश्चन है कि डिप्रेशन जैसे कभी कभी होता है कि हम कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं और खुद से भी रखते हैं और दूसरों से भी रखते हैं, और एज ए मेडिकल स्टूडेंट है और वो खुद से भी रिजल्ट के लिए मतलब एक्सपेक्ट करते हैं जो हम अच्छे करते हैं एग्जाम अच्छा हो, कैसा होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, उन सब का टेंशन होता है। तो प्रभु जी ने इसका रिप्लाई आंसर जो दिया है, प्रभु जी कैन यू प्लीज थोड़ा सा can you please repeat? Where did we stop? Oh, okay. We suffer, okay, when there is a time of exam. But once the exam is finished, the suffering finished, because we put the best, 100%. We did the exam. But if you keep depression after the exam, that's a little bit of a problem. ओके, प्रभु जी जैसे क्वेश्चन का प्रभु जी ने आंसर दिया है कि कभी कभी हमें जो ये प्रॉब्लम डिप्रेशन का जो टेंशन होती है, डिप्रेशन का जो भी टाइम पीरियड होता है, ये टेम्परेरी थोड़ा सा होता है, ये हमें तब तक ही रहता है जब तक एग्जाम का पेज चल रहा होता है, और ये तब खत्म हो जाता है जब एग्जाम भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब देता है जब एग्जाम खत्म हो जाती है, उसके बाद में रिजल्ट को लेके हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं और उस चीज के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यस प्रभु जी। And if you think, you have a little perspective, if you think you're suffering, well, think about this in the Asian countries like Korea and Japan. In Korea, I remember because we used to preach in there, and the children, they school before the school, so they can learn English, this and that. Then they go to the school, and then they go to the school after the school. And so much learning, they don't have time for anything. What you said about in Korea? Yes, they have like a course before they go to the school. That is a type of a school they go like learning English, learn some extracurricular activity, and then after the school they go another extracurricular activity. They have to get a lot of points, otherwise they don't get good jobs. See? Okay. प्रभु जी ने जैसे बताया है कि उन्होंने देखा है कि कोरिया और जापान में, और स्पेशली कोरिया में देखा गया है कि देखा प्रभु जी ने जब वो प्रचार के समय गए थे तब कि स्कूल लाइफ जो होती है, बच्चे वो स्कूल लाइफ में स्कूल टाइम से जाने से पहले ही काफी सारी चीजें सीख लेते हैं, कोर्सेज जो होते हैं वो सारी चीजें सीखते हैं, फिर वो स्कूल में जाते हैं और स्कूल की एक्टिविटीज खत्म होने के बाद में भी वो बहुत सारी चीजें आगे सीखते रहते हैं, तो उन चीज से वो आगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते हैं और एडवांस करते हैं। यस। Well, in China, for example, even worse, because there's 1 billion people in there, and every year there's so many millions get graduated. But graduation is not enough. They have to have master. Master now is the new, bachelor degree. That's bachelor degree. Now, master, you have to take master, minimum. Okay? And now they go for PhD. There's a guy in there, it's a blogger, and he has like 2 PhDs, 3 masters, and so many education. And know what he does? He delivers food to the people. He has some food delivery service or something like that. Because there's no job for him, even him. ओके, प्रभु जी जैसे बताया कि जैसे चाइना देश है, उसमें जैसे देखते हैं कि बहुत सारे जो भी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं वो ग्रेजुएशन उनको करना होता है, लेकिन अभी ऐसा है कि सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करना, मास्टर्स करना है, बैचलर जो हम करते हैं उससे भी आगे बढ़ना है, पीएचडी करनी है,
और जब दो PhD कोई करते हैं, मास्टर्स और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आगे प्रभु जी, व्हाट यू सेड अबाउट फूड डिलीवरी? His job now, instead of working, he has financial degree, he has this degree, that degree. He just food delivery. He get a cycle, he goes out, deliver food. That is what he's doing. And whether he's happy or not, I think he's happy because he has some freedom in there. But it showed that so many degrees and he couldn't get a job. हाँ, जैसे प्रभु जी ने यहाँ पे बताया कि बहुत सारी मास्टर्स और डिग्रीज करने और जो बहुत सारी PhD, डबल PhD भी करके बैठते हैं जो चाइना में, लेकिन वो अभी ऐसे ऐसे टाइम पीरियड में है जो अभी वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, और क्योंकि उन्हें ये सारी चीजें करके भी उतनी खुशी नहीं मिल रही है, और वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, चाहे उन्हें उनके पास कितनी भी डिग्री हो, अपने फाइनेंशियल अपने जो फाइनेंशियलिटी अपने जो सुधारने के लिए। यस प्रभु जी। In China also, there is a new type of people being coming up in China. It's young people. They just go in the middle of the street, they just lay down and sit and just stay laid down in the middle of the street, not in the street, the car, but in the side of the street. They just lay down in there, boom, I give up, finish. And there's a lot of young people doing that. That's a name for that. I don't know, those who lay out, something. It's a new trend. They just give up. What is there for them? Nothing. They have to study so hard and they cannot get a job, and then they cannot even pay the rent. They cannot eat properly. They have nothing to look forward to. So they just go lay down someplace and stay there. I don't know. Do they die? I don't know what's the outcome. और प्रभु जी ने जैसे How बताया कि sad. बहुत सारे डिक्रीज करने के It बाद is. भी ऐसे बहुत सारे यंग पीपल जो है वो बीच सड़क में जाके मतलब ऐसे लेट जाते हैं और कहते हैं हम गिव अप कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। ये एक नया ट्रेंड चला है वहाँ पे, एक नई मतलब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है वहाँ पे। उनको जॉब नहीं मिलता है इतनी सारी डिग्रीज करने के बाद भी। उन्हें उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो गई है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि वो अपने रूम का रेंट भी पे नहीं कर पाते हैं, एक फूड अपने जो फूड वो खरीद कर वो भी नहीं खा पाते हैं। तो इन सारी चीजों में वो कैसे आगे क्या करेंगे, सुसाइड कर लेंगे कैसे, या फिर जिएंगे मरेंगे, क्या होगा उसका आउटकम, का रिजल्ट क्या निकलेगा पता नहीं है। ये जो नया ट्रेंड जो चाइना में चला है। यस प्रभु जी। In Japan, there is a class of people, and there's a name for that, which in Japanese, I don't know. They stay in their home, the little tiny, in Japanese, they have a little tiny home. They stay there for years, 3, 4, 5, sometimes 10 years in their room. They don't go out. Well, how do they eat? Well, they work online, they get the food delivered, and then they stay home. They don't go, they don't interact with anybody, nothing, just working online. ओके। प्रभु जी ने अभी जो चाइना का एग्जांपल देने के बाद प्रभु जी ने जापान का एग्जांपल बताया कि वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा एक समूह है लोगों का, वो एक जगह पर रहते हैं, अपने घर में ही रहते हैं 3-4 साल 10 साल तक ऐसे एक ही जगह पर रहते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते, ना लोगों से मिलना जुलना है, बस वो ऑनलाइन खाना मंगा देते हैं और वैसे वहीं पे खाते हैं। इस टाइप की वो लाइफ जीते हैं। यस प्रभु जी। I'm telling all this because this is an incredible preaching opportunity. These people, they don't have Krishna. The Krishna is the freedom for these people. It's the freedom. They don't have Krishna, so therefore they are in this own mental prison, a little room, or they lay down flat, in some place, in some park in China. They don't have anything to look forward to. And we have so much to look forward to. We shouldn't be depressed. We shouldn't be sad. We should be very positive because we have something very valuable. Okay? ओके। प्रभु जी ने बताया कि जापान को एग्जाम्पल बताया, वो एक ऐसा एक अजीब टाइप का ही है, और हमारे पास एक ही बहुत इनक्रेडिबल मतलब एक अद्भुत एक क्या कहते हैं, एक चांस, एक चॉइस है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके पास कृष्ण नहीं है उनकी लाइफ में। एकदम डिप्रेशन से, उनकी मेंटल प्रिजन, मतलब एक कहते हैं ना, एक
प्रिजन में, एक जेल में रहना ही है उनका एक, जैसे प्रभु जी ने बताया 3 से 4 साल 10 साल तक एक ही कमरे में रहते हैं वो, तो उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई चीज ही नहीं कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। और हमारे यहाँ पे हमारे पास ये भी चीज हम सोचते हैं, जैसे प्रभु जी ने ये टॉपिक जो चल रहा है डिप्रेशन का है, तो हम डिप्रेशन में हमें नहीं रहना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, और वो अपनी एक लाइफ अलग तरीके से जी रहे हैं। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी इनको रीच करने के लिए। यस प्रभु जी। Okay, so do we have any other questions here? किसी के पास कोई क्वेश्चन है? Prashana, right? Prashana. यस। So, Prabhuji, can I ask just one if permission is there? yes, You gave us an analogy of not to be in the island, right? We have to be with people, not to be Very- isolated in an island. Even Japan's example is like an island only for a few years. correct. But you know, when somebody is in depression, when someone is feeling sorry, he or she loves that island. So just 1, 2, 3 thumb rules, then how can we come out of it? It's easier said, like we all know Krishna. For me, chanting may be a great help. But like, you know, so can you give us just 1 or 2, 3 mantras, and you have not still shared your mantra with us? I gave you the mantra already. How can I help you? That is the All mantra. right, I remember. Thank you. Because Just to if you fine, approach, great. if you approach any devotee and you said, how can I help you? You're going to start a conversation. But you want to help the devotee. You don't want the devotee to help you. You want to help the devotee. And you're going to go into his mind. What does he want? What does make him happy or her? What does make him, fired up, and enthusiastic? What is his goals in life? What things move his heart? You see, once you start going in his heart, you start knowing that devotee. You see, the joy of life will come to you, because the joy of life comes to this devotee, it will come to you. Because in Krishna consciousness, the mathematics is different. If you give one, you have one, and you have one you gave. If you give $100, you gave $100, and you still have $100. You see, that is the arithmetic of the spiritual world. So if you give something, you have that something, and the devotee also have that something. You see, so this is one good way to fight that depression, because we have to be very aware that depression can spiral and becomes obsession, and that is a place that we don't want to be. You see, obsessive over certain things, obsessive about our mistakes, our position, and our doubts, become obsessed, and then we cannot think straight. So we have to get out of that, and we need help. We need the Vaishnava Sangha to do that. Okay? Just give a gist, Mata. ओके प्रभु जी। प्रभु जी ने बताया कि माता जी ने जो सीमा मेहरा माता जी ने जो क्वेश्चन किया है कि ऐसा बहुत बार हो जाता है कि अ, हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, ऐसा कोई पर्सन होता है जो मिस्टेक कर देता है, वो उस टाइम में खुद को आइसोलेट करके रखना, मतलब खुद को बंद करके रखना ज्यादा पसंद करता है। तो ऐसे टाइम में हम चैंटिंग तो करते हैं, लेकिन किसी से हम बात वगैरह नहीं करते, तो ऐसे टाइम में क्या किया जाए? ऐसे माता जी का कोई जो मंत्र है आप जो बता रहे थे, तो प्रभु जी ने बताया वो मंत्र ये है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, बताइए। तो उसमें उस इंसान के जाके मदद करने का मतलब ये है कि हम उनसे पूछना है कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चीजें प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर नीचे जो भी हो गया है, मटेरियल लाइफ की प्रॉब्लम है चाहे डिवोशनल लाइफ की प्रॉब्लम है, तो वो शेयर करने से ही हम अब उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे ही, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम हमें छोटी लगने लगी, हम खुद की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे हम खुश भी रहते हैं। और कृष्णा को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। और मटेरियल लाइफ में कैसा होता है कि हम किसी को एक जैसे एग्जांपल देते हैं कि 1 रुपया किसी को दिया है, तो हमें उसका एक हमारे पास से वो चीज चली जाएगी, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस जो लाइफ है, कृष्ण भावना में जो ये लाइफ है, इसमें अलग चीज है, क्योंकि ये कृष्ण से जुड़ी हुई है। हम अगर किसी को $100 देंगे तो हमारे पास भी $100 फिर से आएंगे, बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण। यस प्रभु जी। So, of course, we approach people, not like, can I help you? Yeah, that's also is there, but we approach with a conversation.
Prabhu, Mata, what is your name? What do you do? When did you become a devotee? Everybody likes to tell how they became a devotee, right? Oh, this happened, this Prabhu came, the Mataji came, you know. And all you do is you have a human conversation, the human touch. That is enough to lift the spirit of the person and lift your spirit too. Because many devotees, I saw that in Mayapur, they are feeling alone. But we are the Haribol people. Prabhu, Haribol, 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 Haribol. We're Hariboling everybody, but inside they feeling left out. They don't have a connection. You see, too much Haribol, but no connection. You see, and our job is to listen to the devotees. We don't want to give our problems to them. We want to, not even problem. We want to hear the story. The story, maybe not a problem, but if you hear the story, it's a beautiful thing, because each story is Krishna guiding this devotee to come to him. It's a Krishna story. You see, it's a mini Krishna book in there. Oh, this, that, I ate prasada. I got, it's so many. There's so many. So we collect these pepitas. We are mining this Chaitanya little stones of gold. You see, and we keep in our heart, and we, and it makes us grow too, and make the devotee grow too. You see, and it's a beautiful thing to do that. I inspire every one of you to do that, and you see how beautiful it is. ओके, प्रभु जी ने जैसा बताया कि हमें इंटरेक्ट करना चाहिए किसी के भी साथ, और किसी को अप्रोच करना, किसी की हेल्प करना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को जैसे भी हम किसी को पूछते हैं कि ह्यूमन टच जो देते हैं कि आप कैसे भक्ति में आए, कितने साल पहले आए, आप डिवोटी कैसे बने, तो हर किसी को ये बताने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगता है कि वो कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ में आए। और प्रभु जी ने बताया कि मायापुर में प्रभु जी ने देखा है कि बहुत लोग चाहे धाम में रहे लेकिन वो अलोन रह रहे हैं, क्योंकि वो किसी के साथ बातचीत ही नहीं कर रहे, किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे, बस हरि बोल करते हैं। बहुत ज्यादा हरि बोल करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम किसी के साथ कुछ बातें ही शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ हरि बोल ही करते रहेंगे, तो इट इज ऑल्सो नॉट, मतलब ये भी अच्छा नहीं है। और प्रभु जी ने जैसे बताया कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ में है, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु है जो गोल्डन अवतार है, वैसे ही हम जो छोटे छोटे वो गोल्डन है जो हम हर किसी को दे सकते हैं, और हर किसी के हृदय में वो कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ को, एक जो भटक रहा इधर उधर चला गया अलोन है, उसी को वापस से सही चीज में ला सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करते, वो कृष्णा हमें अंदर से गाइड करते हैं, तब हम जाके वो चीज करते हैं। यस प्रभु जी। Because the most sad thing in the world, the most sad, very sad, is a devotee alone, with so much other devotees around the world willing to connect. So don't put yourself in a lone position. Seek, the association. Seek to hear the devotees, and there's so many things we can do. Cook some prasada, offer to some devotees, that some service is always good. ओके, प्रभु जी ने ऐसे बताया कि बहुत जो वर्ल्ड है इसमें खास करके डिवोटीज को हम कभी कभी ऐसे देखते हैं कि वो अलोन है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। डिवोशनल लाइफ में हम अलोन रहेंगे, डिप्रेस्ड, सैड रहेंगे, तो फिर डिवोशनल लाइफ का क्या ही मतलब है। तो हमें जरूरी इस चीज की है कि हम कनेक्शन बना के रखें डिवोटीज से। कभी कभी ऐसा हम ये कर सकते हैं, किसी को हम अलोन देखे तो हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसे इस तरीके से एक रिलेशन बना के रखें। यस प्रभु। Because I give the example, people of Korea, China, Japan, they have no shelter. They have no guidance. They have desperation. They don't know what to do. You see? So, but with all our problems, we have something beautiful. We have the process of Bhakti Yoga, Krishna consciousness, and the association of the devotees. We have an escape route
things can be so bad, but you always have an escape route to Krishna. And that is our saving grace. And our job is to give that saving grace to people like those Koreans, Chinese, those those Japanese. They cannot even see how deep in the in the difficulties they are. ओके, प्रभु जी ने बताया कि अभी मैं जैसे एग्जांपल प्रभु जी देना चाहते हैं, कोरिया है, चाइना है, जापान है, ये वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि उनके पास है ना किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं है, किसी लोगों का सपोर्ट नहीं है, अलोन लाइफ जीते हैं, उनके पास कृष्णा ही नहीं है। तो हमारे पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम उन लोगों से ऐसे कनेक्शन बनाएं और जो हमारे पास जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ जो है, और हमें जो भी चीजें इनसे सीखी हम डिस्ट्रीब्यूट करें उसे, और उनकी लाइफ में भी कृष्ण को हम लेके आ सकते हैं। यस प्रभु जी। Okay, if someone asks me, Bhakta Bhagi, how can I help you? I also have request. I'm not Krishna. So I want to see two things. I want to see that this beautiful Sangha of ours here, that we are at one point distributing books. And within all of you, somebody comes with some nice idea. I know where to get the books. I know how to send them, to get books and distribute them, okay, through this platform. And I want to have a pray and preach mandir, since the pray and preach is the original, platform. We're going to have a pray and preach mandir that we can go online, and you have a deity, have a door that open, all online, and whatever in the world you are, whatever time you open that temple and you go Mongol Arctic and you go Sandhya Arctic. Somehow I want to do that. And you show a temple right there, you click, you open the door, the deity comes forward, you have darshan, you have singing of, Prabhupada Guru Puj, Mongol Arctic, the whole program is there. You see, a online temple. You see, a real temple online. Not just a video of a temple, but actually totally online. And you know where I got that idea from? No, please share. Okay, can you translate that first? ओके सॉरी। हाँ, प्रभु जी कहना चाहते हैं कि प्रभु जी की इच्छा है कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, इस ग्रुप हमारा जो प्रे एंड प्रीच ग्रुप है इसके थ्रू बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, बुकों का वितरण करें। कैसे करेंगे, कैसे हम तक वो बुक पहुंचाएंगे, हम कैसे करेंगे वो फिलहाल नहीं पता है, लेकिन प्रभु जी की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है। और एक और जो इच्छा है वो प्रे एंड प्रीच मंदिर बनाने की। जैसे हम देखते हैं जैसे मंगला आरती होती है, दर्शन आरती, संध्या आरती, भोग आरती, जो भी होती है, वैसे प्रभु जी चाहते हैं कि हम यहाँ पे ऑनलाइन करें। जैसे भी कोई भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए, वो मंगला आरती भी देख सकता है, दर्शन आरती, भोग आरती, संध्या आरती भी देख सकता है, और गुरु पूजा भी कर सकता है, प्रभुपाद की आरती भी वैसे कर सकते हैं। वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर से प्रभु जी ऐसा चाहते हैं। वो कैसे होगा, लेकिन आगे उसके बारे में सोचेंगे। यस प्रभु जी। So one time, I don't know if I saw in a Hindi movie or actually saw in a house of somebody. But you see, when the people go to do jagya in a house, right, the priest, the purohit, he brings, he has to make the jag in a shala, he has to make the fire, he throws ghee in the fire, all those good stuff, right? So, but this guy, he bought a TV that was like 2 foot by 4 foot, he put in the ground, and the TV was showing the fire, and the people around, they throwing the ghee, which was a cyber ghee or something, and every time they throw it, and like that, and the whole, change the mantras, everything was done, through the, whatever was this television thing, in the floor, the jaga was there, and the offering, everything, all flowers, everything was like that. Huh? Virtual. So, well, whatever it was like a jagya. So, if this guy can make a jagya, and people throw
cyber ghee, to the cyber jagya and chant mantra. We can do a temple, better than that. We can do a beautiful temple, with the door open, and we can actually go maybe inside the temple and take a tour. So I don't know. So, but we can have different deities. You can choose your deities. The deities come and you do Guru Puja or Mongol Artik like that. So that is, I'll be very happy when I see this in a platform. Then we can actually have a temple, and then we can give NOC, and nobody can say no, right? Because we have a temple, and me and Mataji will be the president, and we say NOC here, and nobody will say no, because we have our temple, and our temple is all over the world, okay? And NOC is a non-objection certificate for those. Okay, so because I'm fighting for this, and it's so much, I don't want to talk about this right now, but we're fighting for that, and we're gonna do this. Okay, so if there's no more questions, I thank you all. Remember, Bhagi also had something. He won the books and he won the temple, and we have here our cyber guru Saurav, and we have Gora. Maybe some more in there. You can do it. Make a nice temple, and the people think this is a very intelligent thing, and then you'll be the pray and preach temple. Okay, we can give a name. I'll say pray and preach temple. What is it? It's all over the world. It's the planet Earth. It's the Bhumi Devi. You see, and that's it. Nobody can say anything. Okay, so any more questions? Otherwise, I think it's time to go. We went a little bit over the time. Okay, there's somebody. Prabhuji, I have one question. Can I ask? Yes, please. Yes, Prabhuji, I have a question. We see mostly there are 4 Kumaras, 4 Varnas, 4 Vedas, like different scriptures. So is there any connection between them, among them? You saying that that is 4 Kumaras, 4 Vedas, and 4 Varnas. because they're 4? Yes. Is there any connection, or is it only in the same numerical things? Not necessarily because of the numbers, because we have 3 also. We have also 8, which is a number that show up a lot. Okay. What else? The 3, that's 2. All the numbers, they are very transcendental, and the 4 varnas, they're there because of the modes of material nature, right? Sattva, Raja, Tamas, but actually one is the Raja, Sattva and Raja, Tamas, and one of them double, like that. Maybe it was the Vaishya, that is like Raj and Tamas, like that, but they are presented this way. The 4 Kumaras, 4 kids, I don't think they have anything to do with any number 4, but Okay. that's an interesting observation. But as far as I know, there's no connection of 4. Okay. Okay, Prabhuji. Because there is 8, no, there's 3, right? There is Brahmana, Panchamukhi. There's Brahma's 4 heads, but that's only in this planet. There's Lord Shiva with 5 heads, right? There's 5 heads. So anyway, that is, very interesting. Okay, Prabhuji. We have 1 head, and we have so many problems. If we have more heads, we have more problems. Maybe we should have half a head. Okay, so I take permission, all of you. We can, I will leave you now. I go to, there's somebody wrote something here. Okay, अभी प्रभु जी Preach हम and pray online, transcendental digital temple Ki Jai. See, already somebody is excited about it. Oh, it's It's starting. Dan. Thank you, Dan. Appreciate. Yeah.
I tell you, we do this, people will follow us. Okay? Trust me, it's going to be a big thing. And we need it too. Okay? Okay. So thank you. Anybody has any special questions, something you cannot sleep tonight? You can speak now or hold your peace forever. Thank you, Mata Pushpo. You're being very good today. All right. Okay. So Rav here saying, I ask everyone that you can write me the feedback. I ask feedback, one or two always answer. You should always write something. Okay? You should always write something. And speaking writing, all of you should have a book, a notebook, that a small one. I have one here I can show later. You see that you write your thoughts. For example, this transcendental diaries is because what is the devotee? That is the anyway, the devotee who wrote the transcendental diary, he was taking notes. Huh? Harisauri Prabhu. Harisauri, yes. Okay. He was writing in his notebooks, his notes, everything that was happening every single day. You see, so at the end, he could write this book. You should write your realizations in your notebook, your experiences, your challenges, your victories. You should write and have a notebook with you that you write your experience, because in the future, 20 years from now, 30 years from now, you're going to look back, you see how much you have grown in Krishna consciousness. People, maybe your children, they will look in this and see your development in Krishna consciousness. Okay, so it's a very nice thing to do. And I think Prabhupada also, he advised us to have write things down. So let's do it. Thank you so much. Don't forget the feedback. Okay, so because it's nice. I also need some pepitas, you know, some gold pepitas. Thank you so much. Kushbo, you'll be so wonderful. Thank you so much. Did you finish your exams? No, it's not yet. In the next meditation. Next?